हारोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? जाओ और टीम बनाओ. Hi friends, we are back as promised to you at 4 o'clock and आज बात करेंगे हम मणिपुर की. आज बात करेंगे मणिपुर की and I will take you through this presentation and discuss करूंगा. I'll take your questions also. Yeah, welcome Ayush, Pulkit, Satyam, Aditya, Dilkhush, Ravindra Rathore. आ जाओ, फटाफट आ जाओ. Before we start the session, please like the session. And it takes a lot of effort. And technology to bring this to you. ठीक है, lot of effort and technology to bring a class like this to you. So I'll just share my presentation to you. You can see the presentation here. Yeah, here we are. है ना? Here we are. So we'll just wait for other friends also to join. ठीक है, बाकियों को भी मैसेज कर दो कि क्लास स्टार्ट हो गई है. ओके, सो इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी टू ब्रिंग, make a presentation, bring it to you, put effort, hours and hours of effort it takes for me to present it to you. But आज इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, वायलेंस इन मणिपुर, व्हाई मणिपुर इज बर्निंग. ठीक है, व्हाई मणिपुर इज बर्निंग. एंड don't follow what is coming on WhatsApp and other things. It could be from some other source, but here we'll try and understand what is the problem between the Meiteis and the hill tribes, basically the Kukis. And we will also see where is Manipur and how it is such an important state for India. ठीक है, तो we start with our power slide. जिस slide की हमेशा हम बात करते थे और इस slide को बहुत लोग पसंद भी करते हैं और बहुत लोगों ने इसको अपना स्क्रीन सेवर बनाया हुआ है. एंड जो है ये मुझे बहुत मोटिवेट करती है स्लाइड. ये स्लाइड मुझे बहुत मोटिवेट करती है कि माय सेकंड इनिंग्स इज फॉर योर फर्स्ट इनिंग्स. ठीक है, ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है और ये हमारी कमिटमेंट है. दैट इज व्हाई आई हैव टेकन 4 to 5 hours टुडे आफ्टर द, कल भी किया काम, आज भी किया सुबह, एंड देन द मॉर्निंग सेशन, उससे पहले मॉर्निंग साइकिलिंग, टू ब्रिंग दिस प्रेजेंटेशन टू यू. ठीक है, so keep giving me feedback as we go along. And the capital is Imphal. Very good. ठीक है, पावर स्लाइड आ गई है तो जोश भर गया है. पावर स्लाइड आ गई, जोश भर दिया क्लास में. ठीक है, चलो गुड. सो अभी हम इफ एवरीबडी हैज कम, जो मेरे पुराने बच्चे हैं, नए बच्चे भी आ रहे हैं क्लास में, तो चलो स्टार्ट करते हैं. So the situation will go over why this problem. ये प्रॉब्लम क्यों है उस पे चलेंगे पहले, है ना. ये so मणिपुर आपको पता है, it's a north eastern state of India and has been witnessing violent clashes between ethnic groups. और ये अभी नहीं है 2023 में, ये फेब में भी हुआ था. और पिछले 10-12 साल से this is a unacademy type of field. यही देना है मैंने आप लोगों को. I am going to bring every month 8 to 10 good classes for you. So you are aware, मैं दिखाऊंगा अभी कहाँ पे है मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में. बट व्हाट ट्रिगर्ड वाज ऑन May 3rd, 3 मई को, आज 7 मई है, 4 दिन पहले, when the Manipur High Court had given judgment. इन्होंने दी थी 19 अप्रैल को, but it was on 3rd May that there was a march, by the Kuki students, and that is how things took a turn. So this was Tribal Solidarity March. This was called by All Tribal Students Union of Manipur, ATSUM. तो ATSUM ये आपको पता होना चाहिए, रिटर्न के अंदर भी आ सकता है. ये मार्च क्या था? इट वाज ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च. और शुरू में ऐसे लग रहा था जैसे बाकी मार्च होते हैं, बट the crowds fell to about 80,000, and that is when situation started going out of hand. And mob got violent. Somebody instigated them, and क्योंकि ये हो रहा था छुरा चंदपुर में, जो कि डिस्ट्रिक्ट है एक, and कई जगह पे, and they started setting houses and shops on fire on Meiteis. There are even reports that people were carrying AK-47 rifles.
people were carrying AK-47 rifle. Some of the tribal insurgents also joined this. So there are casualties. काफी लोग जो इसमें हताहत हुए हैं उनमें bullet wounds भी हैं, which is rare in a riot. ठीक है. So police reacted. By the time police reacted, they called the army. Midnight में they called the army. 3-4 तारीख की midnight को army had been called out on this particular thing कि भाई ये जो है इसको मैं इतना बड़ा कर देता हूँ. This is the situation that is taking shape here. इसको let me shift it here because most of my slides are going to go like this. तो कुछ जो है ना nothing will be hidden. So they called the army at midnight and the Assam Rifles, and shoot at sight orders were given to control the situation. Now this is a tweet by Mary Kom, a legendary Olympian and world boxing champion who is from Manipur, and she said, "My state Manipur is burning, kindly help." And she tagged the Prime Minister, Prime Minister's office, Home Minister, the Defence Minister, and some of the prominent TV channels. And this actually spread. You can see by 4 o'clock on 4th May 2:47 AM आधी रात को it had reached 1.7 million views. मतलब लोग, हमें तो पता नहीं था, हमें तो अगले दिन सुबह पता लगा. लोग जाग रहे थे इस टाइम पे, and 1.7 million views at this time this tweet had gathered. So this is a scene from one of the newspaper pictures where some car and some motorcycle, some property has been set on fire. And उसी टाइम ये न्यूज आया कि सेंटर has invoked Article 355. Article 355 क्या है? Article 355 ये मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको. इस पे भी conflicting reports आई. Somebody said center has invoked Article 355. Somebody said it has not been. But the DGP of police was sidestepped, and the ADG, who was the ADG, he was reporting directly to the chief minister on the situation. And at the same time, they also appointed a retired CRPF DG to be an advisor to the chief minister. So all this was taking place. All this was taking place when there was crowds were swelling, and there was violence, and worst kind of violence everywhere. 13 to 20,000 people evacuated at midnight. इतनी situation खराब थी. कैसे हुआ? Even army, which was not supposed to be ready for such a thing, did a fabulous job in this. So what is 355? पहले इस पे बात कर लेते हैं. ठीक है, what is 355? उस पे बात करेंगे. So Article 355 of Constitution provides for emergency provisions for the center to intervene. कि ये कैसा provision है? अगर state government fail हो गई है, internal disturbance है जैसे ये है, या external है, say border state and Pakistan attacks or China attacks or Myanmar, but something happens. So this is provision 355. ये आप याद कर लेना. Thank you Dilkush Mehra. Yeah, please like the video and share it also. It takes a lot of effort by me to produce a video, and we are experimenting. If it succeeds, और अगर बच्चे देखना चाहेंगे तो मैं हर महीने आपके लिए 8 से 10 क्लास लेके आऊंगा करंट अफेयर्स की. फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं. जेनमोर मैगजीन और मेरी क्लास पढ़ोगे, एसएसबी को फोड़ दोगे. एटलीस्ट करंट अफेयर्स की वजह से मार नहीं खाओगे. So Article 355 states that maintenance of law and order, if it falls, it can fall under the jurisdiction of the central government. वैसे law and order क्या state subject है. But 355 invoke होने के बाद it becomes power of the center. This is also designed to ensure that government can act swiftly and decisively in event of any disturbance. So, क्योंकि central government के पास int agencies होती हैं. They have information from IB, from military intelligence, from RAW, air intelligence, naval intelligence, state intelligence, बहुत सारी agencies हैं government of India की. So center has that क्या कहते हैं गरुड़ दृष्टि. They have bird's eye view on these problems. So 355 was invoked, and that is how paramilitary forces were moved in, army was moved in, Assam Rifle was moved in, and they spread across a tiny state, छोटा state है Manipur, but situation was very, very critical at that time. So shoot at sight orders were passed. Mobile internet was suspended for 5 days. And जब mobile internet suspend होता है, you can imagine हम एक बार UPI ना दे पाएं
व्हाट्सएप ना चेक कर पाए, अपना सोशल मीडिया, इफ यू आर अनेबल टू चेक, यू सी व्हाट हैपेंस. प्लस टुडे आवर लाइफ इज डिपेंडिंग ऑन इंटरनेट. We are buying things on internet. We wait for our air tickets to come on internet. Rail tickets, fees, पता नहीं सारा कुछ है. So this was clamped down so that people are not able to share information and rumor mongering can be stopped. Army, Assam Rifles and Rapid Action Force was deployed and nearly 13,000 civilians were rescued by the army. That means these are the people in Meiteis who were in the valley, and the tribals came from upper reaches down, and this was what was happening in almost all districts of Manipur. Indian Air Force was deployed. They were moving aircrafts and helicopters to keep a watch on the situation, because not physically ye apna area, we don't have that kind of intelligence which we carry out of the enemy area, but yahan pe Air Force was keeping a watch, informing down below if there is something happening. ठीक है. Now अब बताऊंगा एथनिक कंपोजिशन क्या है मणिपुर की. ठीक है, एथनिक कंपोजिशन प्लीज ये आपको पता होना चाहिए, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेतीज एंड द ट्राइबल्स हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस. ये नोट कर लो, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस. ग्रीवेंसेस है, पुराने ग्रीवेंसेस है. ठीक है, पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिक भी है, कल्चरल भी है. कल्चर, एवरीबडी फील्स मेरा कल्चर थ्रेटन है. इकोनॉमिक बिकॉज द पीपल हु आर ऑन द वैली, दैट इज वेयर द डेवलपमेंट. वहीं एयरपोर्ट है, वहीं रेलवे लाइन है, वहीं बैंक्स हैं, वहीं स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एंड दे बेनिफिट इकोनॉमिकली. पॉलिटिकली जो है 60 सीट है, उसमें से 40 सीट मैतीस के पास है. सो पॉलिटिकली ऑल्सो दे आर मोर पावरफुल. एंड उसकी आप अपोजिट देखो, जो वैली का लैंड है वो सिर्फ 10% है मणिपुर की ज्योग्राफी का. मणिपुर की ज्योग्राफी का सिर्फ 10% इज द लैंड, एंड मोर देन 56, कोई बोलता है पेपर 56, somebody says 64. So let's assume somewhere around 60% of the state population is Meiteis. 60%. ठीक है, 60 एमएलए में से 40 एमएलए मैती एरिया में, जो 10% रीजन है. और जो फार फ्लंग एरियाज है हिल्स में, दे हैव ओनली 20 सीट्स. दे हैव ओनली 20 सीट्स. ये देखो, ये डायकॉटमी है, बिकॉज वहां पॉपुलेशन कम है. सीट्स आर गिवन एज पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन. तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, बिल्कुल. दीज आर, यू पुट इट राइट, दीज आर क्रॉनिक डिस्प्यूट्स, बट दे नीड स्टेट्समैनशिप टू सॉल्व देम. तो ये देख लो, मेरे बच्चा पार्टी है, मणिपुर है. See, I told you Kalbi, it shares a border with Myanmar. Then we have Nagaland on top, Mizoram down below, Tripura and Assam on the eastern coast. So this state shares a boundary with so many states, and international boundary also with Myanmar, a long boundary. You can see it here. This cursor doesn't work here, but I don't know if you can see my arrow. Yeah, you can see it. Yeah, and this is Imphal. तो ये पहले बात तो आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तिब्बत का है, भूटान का है, अरुणाचल प्रदेश का है. देन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, बांग्लादेश, म्यांमार है, भूटान इधर, चाइना, तिब्बत दैट साइड. ठीक है, चलो. तो दिस इज द पोजीशन ऑफ मणिपुर. ये है डेमोग्राफी. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. ये डेमोग्राफी है. Meiteis are people who live in the valley. People who live in the valley, they are predominantly Hindus. Tribals are, ये जो मैंने tribes हैं, Nagas 22%, Kukis 7.5%, Zomis 4%, Pangals 6.5%, others 4%. These are tribes. They are distributed into two major tribes. दो 34 tribes are there, but two major tribes के अंदर इनका. They are all here. Yes, you see. This is Meiteis. Meiteis सारे के सारे इम्फाल में और थोड़े से यहाँ पे. ये पूरे के पूरे नागाज हैं. इधर ये कुकीज हैं, ग्रीन कलर में कुकीज हैं. So you just see the composition. Meitei means nothing. बच्चा पार्टी, Meitei नाम है. Meitei is नाम of a community.
मीन्स व्हाट, ठीक है। सो ये रिलीजियस कंपोजिशन भी है वहां का। द ट्राइबल्स आर क्रिश्चियंस मोस्टली प्रिडोमिनेंटली, एंड मैथीज जो वैली पे रहने वाले लोग हैं प्रिडोमिनेंटली हिंदू है। So many newspapers, including Indian Express, has covered it very well. Have covered it very well. अगर आप ध्यान से देखोगे, though there are 16 districts in Manipur, but the state is commonly thought as divided between valley and hills. बार बार बता रहा हूं, वैली का मतलब होता है फ्लोर, वैली का मतलब होता है जहां सारे पहाड़ आके मिलते हैं, जो ग्राउंड पर, जैसे कश्मीर में वैली बोलते हैं, है ना, और फिर पहाड़ हैं चारों तरफ, फिर पहाड़ है इधर, अलग अलग रेंज है, लद्दाख रेंज है, पीर पंजाल रेंजेस है, ऐसे ऐसे रेंजेस है, ठीक है। सो बेसिकली द स्टेट इज बिटवीन द वैली एंड द ट्राइब्स एंड द हिल्स, ठीक है। So Imphal East and West. Kukis and Nagas point out that tribal areas are 90% of state geographical area. ये देखो आप, जो स्टेट का एरिया है 90% is the area which is tribal area, which is predominantly Kukis and Nagas. But the bulk of the budget is used in the Meitei dominated Imphal Valley. The Manipur Valley is encircled by skirts of low hills that spread into Nagaland and Mizoram. While tribals can buy land in valley, Meiteis are prohibited from buying land in hills. ये भी एक इशू है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। जो ट्राइबल्स हैं दे कैन कम एंड बाई लैंड इन इम्फाल एंड वैली, बट जो वैली के लोग हैं दे कांट गो एंड बाई लैंड देयर। जैसे हमारे हिमाचल में है, JNK में है, कई जगह पे ये रेस्ट्रिक्शंस हैं कि भाई नीचे के लोग जाके ऊपर जमीन नहीं खरीद सकते। नो, so hills cover 90% of geographical region and are home to 35% of officially recognized tribes, but sends only 20 MLAs to the assembly. ठीक है। While Hindus constitute vast majority of Meiteis, followed by Muslims, the 33 recognized tribes broadly classified as any Naga and any Kuki. मैंने बोला ना 34 ट्राइब्स हैं, एनी नागा एनी कुकी इसके बीच में, एंड दे आर प्रीडोमिनेंटली क्रिश्चियंस, दे आर क्रिश्चियंस। तो ये भी एक फैक्टर है जो मैं आपको बता रहा था, विच डजंट हेल्प द कॉज, इट डजंट हेल्प द कॉज इन सच थिंग्स। सो हिस्टोरिकल क्या है ये मैती कुकी डिवाइड, हिस्टोरिकली क्या है? सो एथनिक टेंशंस हैव बीन एग्जिस्टिंग सिंस द टाइम ऑफ अर्स्टवाइल किंगडम। जब मणिपुर एक किंगडम होता था, या नॉर्थ ईस्ट वाज नॉट डिवाइडेड इनटू, ब्रिटिश हैड आल्सो नॉट कम, तब से इनकी जो टेंशन है चल रही है, और ये मोस्टली जगह पे होती है, हिल ड्वेलर्स एंड पीपल हु लिव इन द वैली फ्लोर। बट फ्रिक्शन ज्यादा कब हुआ? 1950s में, जब नागा नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुई एंड इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई। इंडियन आर्मी वाज डिप्लॉयड देयर इन 50s एंड 60s। बहुत जबरदस्त इंसर्जेंसी चली, नागालैंड इंसर्जेंसी। तब तक ये स्टेट भी नहीं ऐसे बने थे। सो जब नागा इंसर्जेंसी चली तो it gave groups among Meiteis and Kukis also, they also wanted to counter this. They felt कि नागा सबको ले जाएंगे, नागा पीस अकॉर्ड हो गया, नागालैंड बन गया, हमारा क्या हुआ, हमारा क्या हुआ? So this fear of being swarmed by another tribe is also there in this. In the 1990s, NSC and IM pushed harder for self-determination. NSC and IN, it pushed harder for self. The Kuki Zumi groups began to militarize. तो Kuki and Zumi जो groups हैं, इन्होंने भी हथियार उठाने शुरू कर दिए, and Kukis launched their own movement for Kuki land. ये movement भी काफी, but it did not get the traction. It did not get the traction. Did not have the critical mass. इनको critical mass नहीं था ये इसको आगे बढ़ाने के लिए। और नागा movement was wanting a state, was initially for independence, whereas Kuki was only looking for a state within India's homeland. They were not saying it was not a separatist movement. ये ध्यान रखना, जो कुकी लैंड की मूवमेंट है, कुकीज और जूमीज की, it was not a movement to break away from India. It was a movement to get a state or a union territory or something of their own.
Even though the Kukis started out as protectors of Meitei people, the Kukiland demand created a rift between the communities. अब ये पंगा हो गया कि though initially the Kukis, initially the Kukis felt they were being protected by, Meiteis were being protected by the Kukis. They were stronger and they were, but later on इनमें भी distrust हो गया. 1993 there was a Naga Kuki clash, and that time NSCM IM groups cadres allegedly went from village to village in the areas they claimed as belonging to Nagas, emptying the Kuki residents. अगर आप मैप देखो, मैंने दिखाया था ना आपको कि ऊपर नागाज हैं, फिर कुकीज हैं, फिर मैतीज हैं नीचे. So Nagas came into Kuki villages and they were told to empty the villages from there. So many Kukis fled to चूराचंदपुर, जहां पर की ये प्रॉब्लम हुई है, जहां पर ये आगजनी हुई है 3 तारीख की रात को. And they point out that Kukis in one district, although pockets of Kuki villages can be found, increase their sense of insecurity. So काफी Kukis जो है इस एरिया के अंदर आ गए after this problem. So here are some videos. आपने देख ही लिया अनुराग सांगवान का वीडियो, BOCC कोर्स के वीडियोस and communication skill के वीडियोस, and we are rocking on Russia Ukraine war. I brought out lessons. Then NDA topper के बाद I brought CDS topper. Now I'm getting another CDS cadet who has just cleared CDS in a couple of days time. फिर हमने बहुत वीडियो बनाई है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, मैप्स को कैसे यूज करना है, PIQ फॉर्म कैसे यूज करना है. सो इन अ वे राइट फ्रॉम बिगिनिंग से लेके टिल द फाइनल प्रिपरेशन, me and my team has been working and our YouTube channel is rocking. Now we come back to the class. So Meiteis की क्या आर्ग्यूमेंट है, अब बताऊंगा. Meiteis क्या सोचते हैं, Kukis क्या सोचते हैं. हमें दोनों साइड पता होनी चाहिए. हमें क्या है, दोनों साइड पता होनी चाहिए. So Meiteis who dominate the Imphal Valley have been demanding scheduled tribe status since 2012. तो इनको जो है ये scheduled tribe status, they went to court and court ने 19 तारीख को फैसला दे दिया. गवर्नमेंट को बोला भी इनकी डिमांड भी कंसिडर कर लो, इंक्लूड देम इन द ST. सो वो क्या बोलते हैं Meiteis की, हम इंडिजिनस ट्राइब हैं and we have lost our land, culture and identity. Land, culture and identity due to migration and assimilation of outsiders. So they want ST status to preserve their land, tradition, culture and language. Whereas they are not tribals really. And within Meitei community also, a lot of people feel कि हमें नहीं चाहिए tribal status. हम tribal नहीं हैं. But अब people were fighting this case, तो कोर्ट ने उनके फेवर में दे दिया. बट जब भी ये डिमांड उठी है, whenever the Meitei community, it has always been opposed by the tribal groups of the, because देखो पाई छोटा सा, it's the same पाई, उसी में से सबने खाना है. तो अगर सारे ट्राइबल बन गए वहां, तो जो ट्राइब्स के लिए सीट रिजर्व्ड है या जॉब्स में, वो सब में डिवाइड हो जाएंगे. One of the reasons cited for the opposition is the dominance of Meiteis in population and political representation. तो जो politically active communities हैं, जिनके पास 40 MLA हैं उस कम्युनिटी के पास, representing 10% of the land, how can they be considered as scheduled tribe? Why should they get the benefit जो hills में लोग रहते हैं, जहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, स्कूल नहीं है, हेल्थ नहीं है, उनका क्या? They fear that they fear that this will reduce the share of political representation, reservation benefits and land rights. ये tribals का fear है. Because अगर majority community जो कि 60% है,
उनको भी वही राइट मिल गए 35% को है, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगी. They also accuse the Meiteis of encroaching on their land and exploiting their natural resources. ये भी एक इशू है, आगे जाऊंगा कि ये प्रॉब्लम बढ़ती बढ़ती ऐसी स्टेज पे क्यों आई कि देयर वाज वायलेंस एंड मॉडल. मणिपुर को मैं मॉडल स्टेट मानता हूँ, बेस्ट इन स्पोर्ट्स, मैरी कॉम एंड मतलब हरियाणा मणिपुर दोनों जने 2 स्टेट ऐसे हैं जो कि मैक्सिमम मेडल्स लेके आते हैं, मेडल एथलेटिक्स में, बॉक्सिंग में, इन सब जगहों पे. नाउ अब क्या हुआ? ट्रिगर इज गोली कैसे चली, क्यों ये इवेंट, ये कैसे कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ, धीरे धीरे इतना एंगर हो गया कि 3rd 4th की रात को आग लग गई पूरे मणिपुर. तो दिस स्टार्टेड इन February 2023 इसी साल, व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड एंटी ड्रग ड्राइव. मैंने भी कई पढ़े है कि जितने एकड़ जमीन को जला दिया है या उस पे उसको बर्बाद कर दिया है एंटी ड्रग ड्राइव पे, स्पेशली पॉपी कल्टीवेशन. हिल्स के लोग पॉपी कल्टीवेशन कर रहे होंगे, वो कर दिया. इन्होंने क्या बोला, ट्राइबल्स ने, कि दिस इज बीइंग डन टू evict them from their lands and accuse the government of favoring the Meiteis. तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके ऊपर ये चार्ज लगाया ट्राइबल्स ने कि आप जो है मैतीज का फेवर कर रहे हैं, एंड दिस एंटी ड्रग एंड देन एनक्रोचमेंट्स भी हटाए, उसमें कई चर्च भी जो है डैमेज हुए या वो हो गए. सो दे फेल्ट that the government is of the Meiteis and they want to displace them from their land. So this fear was created. Nobody went to them to tell कि नहीं, this is a administrative action. And finally Manipur High Court ने April 19th को सरकार को बोला भी expedite the recommendations. And this inflamed the tribal sentiments. And third को this Manipur Students Union, they marched into the city. उससे पहले the chief minister was going to inaugurate an open gym and that was burnt now. उसको आग लगा दी थी. तब भी ये लग रहा था कि सिचुएशन खराब होगी, but somehow people did not foresee this. और भी कई reasons हैं. Major reason for discontent has been state government notice since August 2022. August 22 से state government का notice है. 38 villages in the protected forest area are illegal settlements and its residents are encroachers. This then drug drive and other things led to this the sentiments getting out of the hand. So 38 villages in the forest area, protected forest area, were declared illegal sentiments कि तुम आप encroach कर रहे हो यहाँ पे. Following this, the government set up an eviction drive. तो अगस्त में नोटिस दिया, गवर्नमेंट ने eviction drive किया इनको निकालने के लिए. वहां clashes हुए. And Kuki groups ने claim किया है survey and eviction is a violation of Article 371C, which confirms some administrative autonomy to tribal dominated hill areas of Manipur. उन्होंने जी आप तो कर ही नहीं सकते eviction, हमें तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है हिल ट्राइब्स को. लद्दाख में भी यही डिमांड है. व्हाई डू दे वांट ट्राइबल स्टेटस? 6th शेड्यूल में यू गेट सर्टेन ऑटोनॉमी. नाउ इशू ऑफ रिजर्वेशन, देयर इज अ इशू ऑफ रिजर्वेशन. ये हर जगह है इशू ऑफ रिजर्वेशन. एवरी इलेक्शन दिस इज बीइंग प्लेड आउट. यू आर सीइंग इट इन कर्नाटक आल्सो, यू आर सीइंग इट एवरीवेयर, रिजर्वेशन. सो दिस इज increasingly becoming an issue of social conflict and political contestation. Politically contest होता है. Many caste and communities demand them, and जिनको benefit मिल जाता है उनकी life change हो जाती है. So others feel कि हमें नहीं मिल रहा है. तो Meiteis are majority in Manipur, and मैंने बता ही दिया 40 seats out of 60 seats are with them. And tribal communities feel ये जो ये reservation है ये उनको भी deprive कर देगा अगर इनको भी ST status दे दिया. So tribal groups are considered to be settlers who migrated from Myanmar. So they are called outsiders. इनको outsider कहते हैं. And the tribal groups have alleged that the present government has targeted them
And many incidents in last 2 years, including eviction from homes, have been cited as acts of hostility and discrimination. The government has defended these incidents as normal administrative action. तो अगर लोगों का भरोसा स्टेट गवर्नमेंट को पीपल डोंट सी एज इम्पार्शियल, फिर प्रॉब्लम है. मैंने कल भी आपको क्लास में बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, सिविल सर्विसेज, military officers, police officers must be without fear and favor. We must operate without fear and favor. आपने जब कसम ले लिया आप मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, विदाउट fear and favor. ठीक है. So the demand is increasing everywhere because the pie is very small, and central and state governments have failed to provide adequate, affordable education, inability of economy to provide jobs. अगर जॉब हो गए तो फिर किसको रिजर्वेशन चाहिए? If there's industry, if there are good jobs, good health, good education, फिर why would somebody ask for reservation? कोई मांगेगा ही नहीं रिजर्वेशन. रिजर्वेशन है जो कल परसों में देख रहा था 99% are vying for that 1% job. कोई SSC, CGL, NDA, CDS, UPSC, Coast Guard, ये सब क्यों भाग रहे हैं 99% बच्चे? Why? Because insecurity is there. So quotas are there. फिर quotas है कि इसका इतना कोटा, इसका इतना कोटा है. So, and governments have been willing because of political considerations. So political consideration, sometimes the courts also play a role in, they must be more proactive, कई बार नहीं होते हैं, but this is a major issue. And reservation का issue get mixed up with social and economic grievances. अगर आप इकोनॉमिकली डिसफ्रेंचाइज्ड हो, जमीन नहीं है आपके पास, दूसरे रिच हैं, वो भी एक अफेक्ट करता है. एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर बाय द कुकीज इज सीन एज अ चैंपियन ऑफ मैती कम्युनिटी. इट डिड नॉट एंटिसिपेट द वायलेंस एंड मिसहैंडल द. ये भी क्लियर है कि स्टेट की जो मशीनरी है, स्टेट इज सपोज्ड टू हैव इट्स ओन इंटेलिजेंस, इट्स पुलिस, होम डिपार्टमेंट. व्हाई डिड दे एंटिसिपेट दिस व्हेन द सिचुएशन वाज गोइंग बैड? And they could not handle it. कोई भी नहीं हैंडल कर सकता जब अचानक ऐसे होता है तो. So any of these issues, whether it's reservation, other grievances, need political solution. You need to talk. You need to sit and talk. Use of army, armed forces, ban, internet ban, this ban, that ban, इससे situation खराब होती है, distress बढ़ता है. So when the state uses strong arm tactics or measures to control people, it further fuels anger. Now this overzealousness on war of drugs, ये भी सोचना पड़ेगा. And the eviction drive, ये दो चीजें, and then the high court judgment. आप देखो कैसे टाइमलाइन मूव हो रही है. कैसे अगस्त में दिया eviction notice, encroachers को निकालोगे इतने 38 विलेजेस से. फरवरी में स्टार्ट हुआ ये ड्रग ड्राइव, ठीक है, हिल्स के अंदर, एंड देन द हाई कोर्ट जजमेंट. सो दीज वर ऑल कैस्केडिंग इफेक्ट, फाइनली ब्लोन अप इनटू वायलेंस. In fact, some of the BJP MPs who are tribals also perceive this as government bias, जबकि उनकी गवर्नमेंट है, उनकी गवर्नमेंट है. And evictions done on forest protection and in terms of removing outsiders, it caused passions to rile up among people because उनकी जिंदगी उस पर डिपेंडेंट, जिंदगी डिपेंडेंट. अदर स्टेट फैक्टर्स क्या है? मतलब यू आर एविक्टिंग पीपल, बट व्हाट अबाउट रीसेटलमेंट? कुछ दिन पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ के सुनाया था आपको, जब दिल्ली में लाखों लोगों को एविक्ट कर दिया, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वन अ केस इन हाई कोर्ट. सो देयर वाज एन आर्टिकल व्हिच सेड यार ये स्लम्स जो बने हैं ये हमारी कमी की वजह से बने, दे आर नॉट क्रिमिनल्स. वी शुड हैव बीन, द सिटी शुड हैव गॉन प्रॉपर्ली, वी शुड हैव फैसिलिटीज टू अकोमोडेट पीपल. नहीं तो कहाँ जाएंगे लोग? So you can't just evict people. There are people. ये समझना बहुत जरूरी है. Some compensation, कब से रह रहे हैं, something must be worked out where they also feel satisfied. Now union government has taken charge of security and violence is low now, and we don't know how many people have died, but 50 plus, maybe much more.
much more people have died. But we don't know. The situation is now, because internet is down and situation is tense but in control. Manipur government themselves threatened to recommend president's rule. In fact, it looks to be a good case for president's rule. What is the way forward? देखो, मेरी क्लास कभी नेगेटिव नोट पे खत्म नहीं होती. हम नेगेटिव इश्यूज को भी पॉजिटिविटी का तड़का लगाते हैं. हम ये बताना चाहते हैं कि हम स्टूडेंट्स हैं, हम डिफेंस यूपीएससी एस्पायरेंट हैं. वी शुड हैव अ वे फॉरवर्ड. वी शुड हैव कि हम क्या कर सकते हैं इसमें, क्या कर सकते हैं, इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं सिचुएशन को. सो अनरेस्ट इन मणिपुर रिफ्लेक्ट्स द डीप रूटेड एथनिक डिवाइड एंड मिसट्रस्ट. तो कैसे आपने ट्रस्ट जीतना है दूसरी ट्राइब्स का आपस में. तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट हैव डायलॉग विद स्टेट होल्डर्स एंड एड्रेस देयर कंसर्न फेयरली एंड ट्रांसपेरेंटली. हर एक को लगना चाहिए नहीं, ये गवर्नमेंट है, मेरी गवर्नमेंट, ये मेरी गवर्नमेंट है. इसमें जो ऊपर बैठे कुड बी फ्रॉम एनी कम्युनिटी और रिलीजन, बट दे विल बी फेयर. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट फियर और फेवर. ठीक है. Government should also maintain law and order, because innocent lives lost, harmed, violence, houses burned down. Imagine 20,000 लोग evicted. 20,000 छोटा फिगर नहीं होता है. घर से आपको रात को निकाल के कहीं गवर्नमेंट की बिल्डिंग में डाल दिया. छोटे छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट विमेन हैं, सिक पेरेंट्स हैं. कैसे करेंगे? सिविल सोसाइटी एंड मीडिया शुड प्ले अ रोल. ये मीडिया तो, टेलीविजन मीडिया तो छोड़ दो. आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन देम बिकॉज आई डोंट कंसिडर देम मीडिया. आई डोंट कंसिडर देम रियल सीरियस मीडिया बिकॉज they are in the studios and doing what they know to do best. But civil society, what about civil society? What about teachers, professors, retired people, leaders of society? उनका बहुत बहुत बड़ा रोल है. They cannot allow tempers to flare up like this. They should think of peace and harmony. Misinformation, rumors, इससे ज्यादा प्रॉब्लम होती. तो civil society must rise up in these occasions. And people of Manipur should also realize that violence is not any solution. And a border state, somebody can use this to fuel another insurgency there. And we need to respect and tolerate each other's culture and identity. Each other's culture and identity. बहुत जरूरी. Peace committees should be set up. Peace committees, Kukis. I'm sure they have friends. I'm sure they work together with each other. फिर क्या प्रॉब्लम है? So उनको लाओ इकट्ठे, सीनियर लीडर्स को लाओ, कम्युनिटी लीडर्स को लाओ, रिलीजियस लीडर्स को लाओ, एंड पीपल हु आर रेस्पेक्टेड उनको लाओ, so that fear and hate is removed. Imagine this is happening in border area northeast. Few days back we were having this problem in many states during festivals. Festivals में शुरू हो गया. So this is tearing apart the social fabric of India. So please, we need peace committees, we need leaders, we need community leaders, we need sensible media, and you and me can support by not forwarding propaganda which comes from here, you send it there. ये भी बहुत ज़्यादा होता है. So leaders with communal ideas and ideologies must pressurize the government to act in a manner which is always against the principle of secularism. We are a country based on secularism. That is the backbone of our constitution, backbone of being an Indian. ठीक है? It is here that intellectuals and voluntary organizations can be more effective. Cyber security architecture is very important. Cyber security, intelligence. Why didn't the Manipur police know? Couldn't they sense this? August में ये हुआ, Feb में ये हुआ, April में ये हुआ. Anger is building. It can't happen overnight. ना 80,000 1 lakh लोग आ जाएं वैली फ्लोर पे AK-47 लेके, and then everything is burnt. What was your this thing? And then the last resort you call the army. Social media platforms are also equally important. ठीक है? So that also you need to keep in mind. ठीक है? So with that we finished
we finished. I will take your questions now. I will take your questions now. I will take your questions now. Yeah. Abhi, I will take your questions. I will just close this and I will एक second. Yeah, I will take your questions now. I think the video has ended. Let me see. Yeah, now I'll take your questions. Yeah, now I'll take your questions. Let me see. थोड़ा बीच में there was a slack. We went out of the presentation and we are here. So, okay, let me see. A lot of comments. I'm happy, but please please always have a informed debate. Always an informed debate with facts and figures, and in an atmosphere which is cordial, an atmosphere which is always. Thank you, Shivam. Yeah, next BOCC is on 20th May. Tonight we are starting. Hello Zishan Heather from Kargil. Next BOCC is 20th. Today BOAC is starting and we are closed. Yeah, I will take your questions. I am not this way or that way. As a educator, I must tell you both the sides. I must tell you both the sides. Thank you, Gargi. Thank you, Kajal, Guliani, Aman Pinto. हाँ, I will give you the आपको presentation चाहिए अमन पिंटो इसमें PDF में you want the presentation PDF? चलो, I'll give you. या BOCC next month करेंगे. See, the onus is on the government of the day, of the state. ठीक है, onus is on them. That is why people elect you. So, if there is an intelligence failure, which is there in this case, we should now ensure such things don't happen again. Okay, Manipur is Meitei land, Nagaland is Nagaland, Burma is Kuki land. Okay, this is. See, now outsider or no outsider, now they are Indian citizens. Now they are. I don't know whether if people have historically moved from one area to another area. अगर कितना हम हिस्ट्री में पीछे जाएंगे, कौन सी ट्राइब, कौन से एथनिक कम्युनिटी कहाँ से मूव कर. नाउ they are all Indians now, and their future of India, everyone believes in them. So we have to take everyone along. Chalo, good discussion. I can see to and fro. Irene, Nation First, Mayank, they're all discussing. Okay, good. See,
एक चीज समझो, वी आर डूइंग दिस फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, ठीक है? हमको हिस्टोरिकल पंडित्स नहीं है, वी आर ओनली डूइंग सो दैट इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड टू यू समथिंग ऑन नॉर्थ ईस्ट, यू शुड नो व्हाट आर मैथीज, व्हाट इज कुकीज, व्हाट इज द इशू, एंड व्हाट इज वे फॉरवर्ड, यही पता होना चाहिए, ठीक है? थैंक यू शिवम पंडित। एमए सेशन आज, यस, okay, I'll send the PDF, today. Nihal Pandey, sir, 6 months is enough for personality development? डिपेंड करता है यार, इन सब चीजों में ना मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं दे सकते, टाइम नहीं दे सकते, इट डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। टुडे 7 o'clock, 7 BOAC 18 is launched, 7 बजे, ठीक है? हाँ, I will bring such sessions. Thank you. Out of 112 named freedom fighters from Manipur, 80 are Kukis. No, I don't think they can be called immigrant. मैं तो बोला ही नहीं. I will not call them immigrant. They are all Indians. Everyone is Indian who is born in this nation. Okay, Basant. You're right, Aman Pinto. Thank you, Kal Amit Veer Pandya. He's watching this. He says, it's commendable that you made people understand the Northeast. Great job. Thank you, Amit. Going for running, good. So I will share the presentation. ठीक है? I will share the presentation with you. Meanwhile, you can log into this Telegram channel. मैं सुबह भी शेयर करता हूँ Telegram channel. यहाँ पे सारी मेरी प्रेजेंटेशन आपको मिलेंगी. जेन मोर मैगजीन आपको मिलेगी. You will get everything here. So, and please subscribe to this channel. Please like and subscribe to this channel. ठीक है? Please like and subscribe to this channel, and I'll keep bringing such videos for you. 40-50 minutes class, 1 hour class, and morning में तो मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस दे ही रहा हूँ. ठीक है, चलो, मुझे बहुत अच्छा है. मैगजीन भी मैंने दे दिया आप लोगों को, and now we will start with special classes also. ठीक है, so please before you log out, don't forget to like the session, and if possible share it with your friends. That I leave it to you. ठीक है, but subscribe to the channel, subscribe to the YouTube channel. चलो, all the very best to you then. ठीक है, we have finished the class. How to learn English, come for BOCC course. BOAC, which is SSB guidance, is starting today. ठीक है, ये स्पेशल क्लास आज मैंने बहुत दिनों के बाद ली है. अभी मैं रेगुलरली लूंगा once I get hang of the technology part, and maybe have a smart board someday, जिस पे स्मार्ट बोर्ड पे क्लास चलेगी तो और भी अच्छे से चला पाएंगे हम. ठीक है, चलो.